Okay, good morning students. Aji hame discuss kariya class 7 CBSE chapter 1 mathematics. Okay, chapter 1 integer chapters. I will try to complete this chapter. पूरा chapter पढ़िया पे चेष्टा करछि जति हो बाकी next part रे हम पढ़ेबा. Okay, चेष्टा करछि complete करे. So today we discuss the integers. ये जो integers है हमरा असला represent कोन. Now you know that before that we will discuss natural number. Natural number kono. What is natural number? You know that is n starting from 1 2 3 4 like that. Whole number w 0 1 2 3. तो before integer आमे integer पढ़िया आगरो आउ दिटा नंबर अछि पूरा नंबर सिस्टम रे. ओडेला natural number आउडेला whole number, right? So natural number is all the counting numbers starting from 1, that is called natural number. Our whole number is all the counting numbers including 0, that is known as whole number. That representation is W. So here natural number, whole number. Next one is integer. Integer. So integer is Z or I. Okay. एमो बोर्ड रे लिखो से द हैंड जो राइटिंग टा लेटर साइज छोटा देखा जाउची तमे तमरो जो मोबाइल रे हला टिके जूम करियो पूरा क्लियर देखा जियो सब कंप्लीटली पिक्चर से तो फिगर से तो सब देखा जियो बोर्ड रे अलग देखियो हला. तो मु चाहूची छोट ले पूरा बेसिक कथा एट अ टाइम लिखिया भाई बोर्ड रे सेति में छोटे करछ लेटर, राइट? सो z is all negative and positive integers, all negative and positive whole numbers, all negative and positive whole numbers are called integers. So that means in integers there are two types of numbers are there. One is positive, one is negative, right? Including 0. So 0 to onwards both sides, right side, left side. Always in the left side towards you, that always in the left side, from my left side. Left side is what? Negative number. Right side is positive number. Okay. So this is positive from this part. That part is positive and this part is negative, right? So got a plus, got a minus, and this is a 0. Finished. So this is about the integers. Over. बुझेला integers कोन सब तक positive, all negative, all positive, whole numbers are integers. All counting numbers starting from 1, that is natural number. All count natural numbers including 0, that is called whole number, right? हला स्पीड को मो जति की पाउची स्पीड भी पाउची स्लो भी पाउची. All counting numbers are called natural number. All counting numbers and 0 together is called whole number. Then integers कौन वाला? Integers होची फर्स्ट रे कहलना all negative and positive whole numbers are integer. सॉरी वाला एबे तारो properties. Now we'll discuss the properties of the integers. Okay. The properties of integers, what we'll discuss the properties of integers. Number 1, properties closure. If that is A belongs to Z, B belongs to Z, then if A belongs to B, that means A is an integer, B is an integer. If A is an integer और B गोटे integer ही थिबो, then कौन होची closure board रे ना तरा addition ता देखियो closure board for addition. Then for addition, if A is an integer, B is an integer, then A plus B also belongs to Z. Example 3 गोटे integer, 4 गोटे integer, तो 3 plus 4 answer also 7. Therefore 7 also belongs to Z. बुझियला. If A is integer, B is integer, A plus B also integer. यदि A गोटे integer कि B गोटे integer तो तनको ऐड करले भी से माने गोटे integer हेबे. बुझियला. ता माने if A is integer, B is integer, then A belongs to Z, B belongs to Z, then A plus B also belongs to Z. That means if A is integer, B is integer, then A plus B also integer.
एग्जांपल देली 3 गोटे इंटीजर 4 गोटे इंटीजर ताको हम ऐड कले जो 7 होची 7 भी गोटे इंटीजर बुझियला तो ये हला दिस इज फर्स्ट क्लोजर दे फॉर एडिशन दिस वर्ड इज क्लोजर तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन closure property for subtraction a minus b also integer. Let's try. That is equal to suppose 3 minus 4. If answer is minus 1, therefore minus 1 belongs to z. Yes. If a is integer, b is integer, a minus b also integer. If 3 is integer, 4 is integer, 3 minus 4 answer is minus 1. So minus 1 also integer. Bujhela. Then asla multiplication for multiplication. For multiplication that is equal to a into b belongs to z. A into b belongs to देखो तो suppose मैं कहूँ 3 into 4 that is equal to 12 therefore 12 belongs to z therefore 12 belongs to z बुझेला a जदि इंटीजर ही थिबो b जदि इंटीजर ही थिबो सेमान को ऐड कले सेटा भी इंटीजर हबो सब्ट्रैक्ट कले b इंटीजर हबो इनटू कले भी इंटीजर हबो डिवाइड कले इंटीजर हबोनी डिवाइड कले इंटीजर हबोनी तो फॉर मल्टीप्लिकेशन ये सपोर्ट कला ये फॉर डिवीजन that is a divided by b not belongs to z तो 3 एग्जांपल यार एग्जांपल होचे हला यार एग्जांपल अलगा देबी यार एग्जांपल केमते ना सपोज that is 0 belongs to z 5 belongs to z therefore 5 by 0 no 5 by 0 also not belongs to z मु 3 रे भी सेम एग्जांपल भी आउट दे देबा चलिबो 3 by 4 also not belongs to z 0 5 by 0 is not belongs to z 5 by 2 भी 0 z 5 by 0 भी 0 में ओके बट 0 by 5 भी 0 to z तमको सर डिवीजन में तो 5 0 by 5 आंसर 0 हो छ ना no this is also integer therefore 0 belongs to integer but जे जो रूल टा माने सपोज डिवीजन रो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन क्रिएट करछ माने तो सब नंबर को सपोर्ट करिया दरकार गोटे यदि मिस करियला दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ओबे दैट रूल ओके सो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट ओबे द डिवीजन रूल सो ये सपोर्ट तीनटा सपोर्ट कला एटा सपोर्ट कला नहीं दिस इज division not supported so the closure property if a is integer b is integer a plus b also integer a minus b also integer a into b also integer a by b is not an integer so this is all about the closure property of addition subtraction multiplication division the final conclusion here once again I will just do this final conclusion for this that is equal to closure property of addition okay you can write okay so this is next closure property of addition subtraction multiplication division completed then you can say what if a belongs to integer b belongs to closure property this is your addition subtraction multiplication division that is addition subtraction multiplication division addition subtraction multiplication division तो addition support कला subtraction हला multiplication भी हला division हला नहीं right एवला टेबल टे तमे मन रखियो addition the closure property of addition for the closure property of addition for integers satisfy the closure property of subtraction for integers satisfy the closure property of multiplication of integers satisfy the closure property of division for integers not satisfied हम भावछ साज एते स्पीड केमते कहउछ ना एटा मु कहिला वाले मु निजे ध्यान दोछ मु कोन कहउछ सेही को फोकस करके प्रेजेंस ऑफ माइंड रे कहले तमे कथा कहि परबो राइट तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन closure property of integers for addition satisfied closure property of integers for subtraction satisfied closure property of integers for multiplication satisfied closure property of integers for division not satisfied clear तो ये सरी गला देन नंबर 2
commutative properties तो commutative if है मुझे speed करके try करो बुझिया पे if है that is if A belongs to Z, B belongs to Z, then A plus B equal to B plus A minus B not equal to B minus A into B equal to B into A divided B is not equal to B divided by A. यार एग्जांपल देखो केमती करूची मु यार एग्जांपल देखो हमर एटा होची आज चेष्टा करची मु जति हला हला नले काली करबी राइट व्यस्त होबार दरकार नै किछि तमे क्याउड क्लास रे करबी तमे देखो मार्क करबो फुल स्टडी तो मु एटा को एबे सिस्टमैटिक करिया चेष्टा करची चैप्टर 1 7 नो देखिबो दिस इज integer chapter 1 integer class 7 CBSE. This is part 1 video, part 2 video maybe after 2 days or 4 days. Okay, so this is commutative properties. If A is integer, B is integer, then A plus B also A plus B is equal to B plus A. Example here example if example 2 belongs to Z minus 3 belongs to Z, right? A plus B. So 2 plus minus 3 and is equal to minus 3 plus 2. Sorry, B plus A plus B. Then that is equal to okay 2 minus of minus 3 is not equal to minus 3 of minus 2. Okay, this is minus 2. So 2 minus that is 2 plus 3 answer is equal to minus 2 minus 3 minus 2 finally 5 is not equal to minus 5. Okay, so this is not equal, right? So 2 plus 3 is not equal to minus 3 minus 2. So ये भी satisfy गला बुझी पालो तब देखो minus 3 जो भी नंबर लो any number integer any number नो तो A plus B is not equal to B plus A 5 plus 3 जहाँ sorry माइनस पता हो A minus B is not equal to B minus A 5 से minus 3 जहाँ 3 minus 5 से है okay 3 minus 5 is not that one, so this one also not correct. Similarly 3 ऐसा ही हम डिटेल अच्छी ना तो A plus B plus A minus B minus A A into B suppose into करिए ना तो 3 into 4 जहाँ 4 into 3 से that means 3 into 4 is equal to 4 into 3. 3 plus 4 is equal to 4 plus 3. 3 minus 4 is not equal to minus 4 minus 3. 3 by 4 is not equal to 4 by 3. So that means, so here that is 3 into 4 is equal to 4 into 3. ये correct. So ये is not satisfied. ये भी correct. Then 3 by 4 is not equal to 4 by 3. The commutative उल्टा the order change कले भी काम करते हो ना कि तो मुझे कथा कौन सी statement दोचे तो भात खाइबा हाथ धोइबा हाथ धोइबा भात खाइबा भात खाइबा हाथ धोइबा हाथ धोइबा भात खाइबा बुझिबा लागि छी हाथ धोइबा भात खाइबो हाथ धोइबो तो ओल्टे की स्टेटमेंट लिखिले ओल्टे की जदि हम स्टेटमेंट लिखुचे ताहाले हम स्टेटमेंट काम करछ ना करले हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो भात खाइबो बोले दियो भात खाइबो हाथ धोइबो हां भात खाइते हाथ धोइबो बोले ना yes like that so हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो तो पूरा मैच कला एकदम एक्सीलेंट दैट इज इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ओके बट जता पिंदिबो सॉक्स पिंदिबो जता पिंदिबो सॉक्स पिंदिबो जता पिंदिबो चलिबो जमा चलिबने अरे जोता पिंदिबो सॉक्स पिंदिबो केम देबो आगो सॉक्स पिंदिबो तापर जोता पिंदिबो ना ओल्टे लेक हबो की हबोने तू दि पागल हेतु ताले मिट पिंदिबो हां सेमते हबो की केबे हबोनी जा ऑर्डर रे जटा हबो ना लाइक दैट ये विषय यदि ऑर्डर चेंज हला ताहाले सेटा कोन हबो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि होउची ऑर्डर चेंज करले ताले कम्यूटेटिव मानिला जदि ऑर्डर ना होउची दैट इज डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव एग्जैक्टली सेम थिंग a plus b is b plus a minus b is not equal to b minus a into b is equal to b into a by b is not equal to b by a हला
तो ये तो मुझे यूट्यूब रे ये पढ़ुची से काफी नुहे कि ऑफलाइन में पूरा जबरदस्त पाठ पढ़ा होची जेमि पढ़ेला वाला माने बहुत कथा डिस्कशन होची यूट्यूब में सेटिंग करि परने मोर तो प्रोफेशनल यूट्यूबर नुहे मु एडिटिंग फेडिंग होई से यात्रा करि परने जस्ट पूरा जेमि पूरा डायरेक्ट पूरा देसी पूरा नेचुरल नु पढ़ाए तेणु से जदि तुम आउरी टिके क्लाइड हा दरकार और अधिक कथा बुझे अछि डाउट मुझे क्रिएट होछि पचाई परनो तो आइदर तुम मते कमेंट रे पचाबो सेसुदा नै किंबा मते एक काम करो तुम जदि आसीबो आइकन ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर आसी परिबो ताहाले किंबा मते फोन करिवो डाउट क्लियर अछि पचार बुझे देबी आसीबो देखा करो प्रॉब्लम नै हला तो हमरा किछि फ्री पैकेज रहउछि से कथा बुझी परिबो तुम क्लास रे हम मो बागरे एति हेल्प पाई परिबो हला किछि पिला को हम पूरा हेल्प पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम ट्यूशन दोउछु तो सेटा भी तुम आसिक देखि परिबो बा पता फोन कर जानि परिबो कोन होछि केना हला कारण मोर क्वालिटी हम पूरा बिलीव करे डिसिप्लिन क्वालिटी मु 100% बिलीव करे ए फालतू पिला सहित हे फेबे मस्ती टाइम वेस्ट करे मोर पसंद नै हला प्लस टू द पॉइंट काम मु जानि छी प्रॉपर्टी जानि छी क्लियर जानि छी पूरा कांसेप्ट 100% क्लियर अछि तो मु पिला को क्लियर बुझाय चेष्टा करी तापर को पिला बुझी पारला कोडा बुझी पारला नै सेटा पिलार ब्रेन ऊपर डिपेंड करछि सब पंचांगन समान नै गोटे पिला थरे कहले बुझिबो आ 50 थर कहले भी से बुझी पारिबो नाही इम्पॉसिबल मु जो भी टीचर पढान बुझे परिबो इट्स माय चैलेंज कारण से ब्रेन ता सत्य के हम के लोड दबा बुझि पर समस्त समान ब्रेन के ताल समस्त कोन तैयार चंद्र ओके चलो जा भी हो तुम जदि किछि बुझे अछि एटा और एक्स्ट्रा ताले तुम आसी आइकन ट्यूटोरियल कर दरे मोसे देखा करिवो कथा हवा ओके ये सल्ला ताले ये एक क्वेश्चन टेम प्रॉपर्टीज बने दबा यदि यार करछे में बुझा देखा हो बोर्ड ठीक देखा हो तो हां यस एठी देखो बोर्डटा तमरो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो एडिशन सपोर्ट कला सब्ट्रैक्शन ए पेज नॉट कला नहीं मल्टीप्लिकेशन कला डिवीजन कला नहीं राइट ए बॉक्स बहुत कम दबो तो एडिशन यस सब्ट्रैक्शन नो मल्टीप्लिकेशन यस डिवीजन नो तो यार कहली सब एग्जांपल दे देली तो 3 by 4 is equal to not equal to 4 by 3 3 minus 4 is not equal to 4 minus 3 3 plus 4 is equal to 4 plus 3 3 into 4 is equal to 4 into 3 okay this is the commutative property सरी गला तो ये commutative वाला हमें पढ़िया कोन commutative जाउची तापरे हमरो कोन जायची commutative वाला क्लोजर बॉडी वाला एसोसिएटिव तो बहुत कथा अछि मतलब कुछ माने आज जति सिस्टम देख लेबे हमरो ऑलरेडी वीडियो 17 मिनिट हे छला 17 मिनिट तो बेसी लॉन्ग वीडियो हम करा चाहने ठीक अछि आज हम जोडिया पेपर कहबा तो नेक्स्ट पार्ट रे बढ़िया एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूट तीनटा पेपर तो तीनटा वीडियो करिवे गोटे वीडियो सरी बरे टाइम अधिक न हो मते भी कंटीन्यूअसली दादा हम पढेबनी टाइम पैकेज अछि 10 मिनिट 15 मिनिट लगा वीडियो पढाए 17 मिनिट ऑलरेडी हे छाणी ओके तो थैंक यू दिस मच आज भाई ला दुईटा पेपर पढेले कम्पिटिटिव और सेमती पूरा कंप्लीटली चैप्टर 7 टा सॉरी चैप्टर 1 टा क्लास 7 रा सीबीएसई पूरा सार देबे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जा करके सार देबे तमे देखो कंटीन्यूअसली फॉलो अप करिवो और जदी डाउट क्लियर अछि बुझे अछि मते कमेंट लिखि दबो तो गोटे मु कहूची सीबीएसई रो गोटे पिला यदि 7 क्लास रो कोनसी ट्यूशन दरकार नै जेपन भाबंतु तम संगे मनोज पंडा सर अछंती आ आइकन ट्यूटोरियल तम संगे अटैच अछि तुमको ट्यूशन जमा करिया को पड़िबो नाही 7 क्लास रे जदी तमे मो संगे कांटेक्ट रे यूट्यूब रे खाली फॉलो अप करछ राइट कंटिन्यू एंड कैरी ऑन आई विल हेल्प यू okay thank you